Hello students, welcome to the maths class. So today is your test of this chapter, playing with numbers. So let's quickly continue with the revision of the leftover part of this chapter. In the previous class we have revised till divisibility by 3 or 9. Okay, now today we will continue our revision with the concept of divisibility by 4. Okay, so what this divisibility rule says, a 3-digit number is 100a plus 10b plus c. Now you are very much aware of the general form of 3-digit number, that is 100a plus 10b plus c. Okay, now tell me, it is a general form of 3-digit number ABC, na? Okay, now tell me, in the general form of 3-digit number ABC, this 100a can be written as 4 into 25a? Yes, it can be written. How? See, 4 into 25 gives you 100 and this a will give you 100a. Okay, so that means 100a can be written as 4 into 25a? Yes, it can be written. Now, in this general form, 10b plus c can be written as bc. How? See here, if I ask you to write the general form of this 2-digit number bc, how will you write it? 10b plus c, na? So when you can write this bc as 10b plus c, you can write this 10b plus c as bc also, ना? अगर आप bc को 10b plus c लिख सकते हैं, तो 10b plus c को bc भी तो लिख सकते हैं. So वैसे आपने 10b plus c की जगह bc लिख दिया. So 4 into 25a plus bc. Okay. Now this 4 into 25, that means this first term is a multiple of 4 because it is being multiplied by 4 now. So it's a multiple of 4. That means it is considered already to be divisible by 4. You need not to bother about this term. You just focus on this second term, that is BC. ABC is divisible by 4 if BC is divisible by 4. Now this whole 3-digit number ABC will be divisible by 4 if BC is divisible by 4. That means if the number formed by the digit at the tens place and unit place is divisible by 4, which is BC in this case, okay, your whole 3-digit number ABC will be divisible by 4. अब ABC में देखिए आपका A 100 place की digit है, B आपकी tens place की, C आपकी unit place की. सो BC क्या हो गई आपकी टेंस और यूनिट प्लेस की डिजिट हो गई ना. सो उनसे मिला के जो आपका नंबर फॉर्म होता है, उनको रखने पे जो आपका नंबर फॉर्म होता है, अगर वो आपका 4 से डिविजिबल है, सो आपका पूरा 3-digit नंबर ABC 4 से डिविजिबल होगा. Okay, I hope this one is clear. Moving on to the concept of divisibility by 5. Let a 2-digit number be 10a plus b. So for 10a plus b to be divisible by 5, b should be 0 or 5. General form of a 2-digit number AB will be 10a plus b. You all are very much aware of it. Okay, now if you have to check out whether this 2-digit number is divisible by 5 or not, just focus on the unit place digit, that is C over here. Sorry, just focus on the unit place digit, that is B over here. Okay, now if this unit place digit B is found to be 0 or 5, अगर B की जगह 0 होता है या 5 होता है, so this whole 2-digit number AB will be divisible by 5. Why? Because this term 10a is considered already to be divisible by 5. Okay, so you just focus on the unit place digit B. If it is found to be 0 or 5, the whole 2-digit number AB will be found to be divisible by 5. Same is the case with 3-digit number. General form of 3-digit number is 100a plus 10b plus c. C should be 0 or 5. If you want to check whether the number 3-digit number is divisible by 5 or not, check its unit place digit. That is C in this case. Okay. So C अगर आपका 0 या 5 आता है, so आपका पूरा 3-digit number ABC 5 से divisible होगा. Now next divisibility rule is, fifth one is divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it divisible by both 2 and 3. Okay, a number is considered to be divisible by 6. If you want to check whether the number is divisible by 6 or not, check its divisibility by 2 also and 3 also. If the number is found to be divisible by 2 and 3 both, the number is already considered to be divisible by 6. Now, you know the divisibility rule of 2 and 3. So go through that rule. Using that rule, check the divisibility of that number, and if the number is found to be divisible by 2 also and 3 also, both of them is important. Okay, so that number is ultimately considered to be divisible by 6. Sixth rule is divisibility by 8. Let the 4-digit number be ABCD. Then अब यहाँ हम 4-digit number की बात करेंगे. Okay, now this अभी से ABCD में A is the digit at 1000 place, B is the digit at 100 place, C is the digit at tens place, and D is the digit at unit place. Write the general form of this 4-digit number. So 1000A plus 100B plus 10C plus D. Okay, ये हमने लिख लिया. Now tell me, this 1000A can be written as 8 into 125A. Yes, it can be written because 8 into 125 gives you 1000 and A means 1000A. Okay, plus now this 100B plus 10C plus D can be written as BCD.
Yes, it can be written. How? If I ask you to write the general form of any 3-digit number BCD, how will you write? You will write like this only ना. B आपके 100 प्लेस की डिजिट है, आप उसको 100 B लिखेंगे, प्लस C आपकी 10 प्लेस की डिजिट है, आप उसको 10 C लिखेंगे, D आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट है, उसको D लिखेंगे. So इसकी जगह आप BCD लिख सकते हैं. So here is the BCD. Okay. Now this term is a multiple of 8. So it is already divisible by 8. You need not to check this term. You just focus on this term. That means the यहाँ BCD का क्या मतलब हुआ? Number formed by the digit at 100 place, 10s place and unit place. ABCD is divisible by 8 if BCD is divisible by 8. अगर आपका BCD 8 से divisible आता है, so that means their whole 4-digit number ABCD will be divisible by 8. Seventh divisibility rule is divisibility by 10. Let a 2-digit number be 10a plus b. 2-digit number आपका 10a plus b होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है. It is divisible by 10 if b is equals to 0. अगर आपको प्रूव करना है, if you want to check whether this 2-digit number is divisible by 10 or not, check its unit place digit. That means b over here. Okay. अगर आपकी unit place digit 0 आती है, so आपका 2-digit number 10 से divisible होगा. Okay, that is why it is written that अगर आपका b 0 आता है तो आपका 2-digit number 10 से divisible होगा. Now 3-digit number के केस में आपको जनरल फॉर्म पता है 100a plus 10b plus c. In this case also you have to check c only. Okay, but see here 100a और ये पहले जो दो टर्म्स है जनरल फॉर्म में, इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं. So 100a में से 10 कॉमन लेंगे अगर, तो अंदर क्या बचेगा 10a प्लस 10b में से अगर 10 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा b. Okay, plus c को as it is लिख देंगे. Now this 3-digit number will be divisible by 10 if c is equals to 0. अगर आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट c 0 होगी तो आपका 3-digit नंबर ABC 10 से divisible होगा. Now we will discuss the last divisibility rule, which is divisibility by 11. So हम 11 की divisibility को 2-digit, 3-digit, 4-digit सबके लिए check करेंगे. Okay. First of all, let's check the divisibility by 11 for a 2-digit number. So you know that a 2-digit number can be written as 10a plus b. That is, let a 2-digit number be 10a plus b. Okay. Now this 10a can be written as 11a minus a, because when you solve 11a minus a, you will get 10a only. Okay. So this 10a can be written as 11a minus a plus b as it is copied. Now, write 11a separately and write this b minus a in one bracket. b के पास देखिए पॉजिटिव साइन है, a के पास नेगेटिव, so b minus a इसको एक ब्रैकेट भेज लीजिए. Okay, for a number to be divisible by 11, b minus a is equals to 0 implies that b is equals to a. That means if you want to check whether the number is given 2-digit number is divisible by 11 or not, focus on this b minus a value. If the difference of its digits is 0, or you can say both the digits of the 2-digit number is equal, so that means the given 2-digit number is divisible by 11. What I mean to say is कि देखिए 2-digit number a भी 2 digit से बनता है. अब अगर आप 2 digits, कंडीशन क्या है कि आपकी दोनों digits का डिफरेंस 0 आना चाहिए, या फिर दोनों digits हम कह सकते हैं जिसको कि बराबर आनी चाहिए. So अगर हम 22 ले लेते हैं, so इस केस में देखिए a की जगह क्या है 2 और b की जगह भी 2 है. So b minus a अगर आप करेंगे तो 0 हो जाएगा, और दोनों डिजिट्स a और b बराबर भी. दैट मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, implies that आपकी दोनों डिजिट बराबर भी आ रही है. So it proves that this 2-digit number is divisible by 11. Okay. And there is a condition that आपको a और b की वैल्यूज, आपको दोनों डिजिट्स जो लेनी है वो आपको 0 से 9 तक कहीं पे भी आप ले सकते हैं. 0 से लेके 9 तक आप दोनों डिजिट्स को कुछ भी ले सकते हैं. Okay. It can be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 9. Now moving on to 3-digit number. Our 3-digit number is 100a plus 10b plus c. Now this equation can be written into this form. I'm not going into the detail of this derivation. For detailed explanation, you can watch a previous video or you can ask me personally. Okay. For now, you understand this, that this equation can be written in this form. Fine. Now for 3-digit number to be divisible by 11, a minus b plus c should be divisible by 11. For checking whether the 3-digit number, whether the given 3-digit number is divisible by 11 or not, check this term. That means आप पहली डिजिट रखिए माइनस दूसरी डिजिट प्लस तीसरी डिजिट, और अगर इनको सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू ऑब्टेन होती है, दैट वैल्यू इज डिविजिबल बाय 11. सो दैट मीन्स योर होल 3-digit नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. That means you need not to bother about this first term. This first term is already considered to be divisible by 11. You just check this term, and if this term gives you the value which is divisible by 11, your whole 3-digit number ABC will be divisible by 11.
Now moving on to 4-digit number. So now a 4-digit number is 1000A plus 100B plus 10C plus D. This is the general form of 4-digit number. Now this equation can be written in this form. Again, I'm telling you, I'm not going in detail of the derivation. For detailed explanation, you can watch your previous video related to this chapter. Okay. So again, you don't have to bother about this first term. This first term is already considered to be divisible by 11. Just focus on this term. Okay. So मैंने क्या बोला कि आपका 4-digit number है ABCD. Okay. So जैसे मैंने कहा आपको second term पे focus करना है. So for a number, a 4-digit number is divisible by 11 if difference of sum of digit in odd places and sum of digit at even places is either 0 or multiple of 11. अब देखिए आपकी ये यहाँ से राइट साइड से देखिए तो 1 2 3 4 आपके B और D ऑड प्लेसेस की डिजिट्स हैं 4-digit नंबर में और आपकी A और C इवन प्लेसेस की डिजिट्स हैं 4-digit नंबर में. ओके. सो दैट मीन्स ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस की डिजिट का सम अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल 11 22 33 44 55 66 सो ऑन. ठीक है. इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपका 4-digit नंबर 11 से डिविजिबल होता है. दैट मीन्स if the value of this after solving this whole term, if the value that you obtain is 0 or any multiple of 11, that means your whole 4-digit number is considered to be divisible by 11. Okay, so I hope all these divisibility rules are clear to you and you can solve questions related to them. Moving on to next topic, which is letters for digits, cryptograms. Now this topic is all about solving a puzzle. Basically in this puzzle you have been provided with some of the letters which will represent a particular digit and you have to crack that which letter represents which digit. It is like cracking a code. Okay, so इसी तरह की जो puzzles होती हैं जिनमें आपके जो letters होते हैं वो particular digit को represent करते हैं और आपको उस letters की value find out करनी होती है कि that वो किस digit को represent कर रहा है. So such type of puzzles are known as cryptograms. Okay, so now in this topic there are certain rules which we have to follow for solving questions. Those rules are, rule number 1 says each letter must stand for just one digit. हर लेटर सिर्फ एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द क्वेश्चन. अगर आपको कोई लेटर कहीं पे ए दिया है और अगर वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू आउट द क्वेश्चन ए विल रिप्रेजेंट 2 ओनली. ए की वैल्यू 2 ही रहेगी. दैट मीन्स ईच लेटर रिप्रेजेंट्स ओनली वन डिजिट. ओके. रूल नंबर 2 इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी 0. किसी भी नंबर की पहली डिजिट 0 नहीं होगी. It is not possible that the first digit of any number is 0 in these questions. Okay. Now for getting more clarity in the concept, for making our concepts more clear, let us discuss a question. So here's the question. Find A and B if. अब आपको A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है. if क्वेश्चन आपका ये है A1 plus 1B gives you B0. अब आपको देखिए A1 और 1B इस तरह से या फिर कॉलम वाइज करें तो 1 और B को ऐड करें और A और 1 को ऐड करें तो आपको B और 0 फाइनल वैल्यू मिल रही है. आपको सॉल्व करनी है A और B की वैल्यूज निकालनी है. सो पहले हम राइट साइड से एडिशन स्टार्ट करते हैं. ओके. सो राइट साइड के अकॉर्डिंग आपको क्या कहा गया है कि क्लियरली 1 plus B gives a number whose unit digit is 0. अब आपसे कहा जा रहा है कि 1 plus B. अब यहाँ एडिशन का मतलब क्या है, 1 और B को आप ऐड करेंगे. सो 1 plus B आप ऐड करिए और आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है ऐसे ऐड करिए कि आपको जो डिजिट मिले उसमें यूनिट प्लेस की डिजिट 0 हो, क्योंकि जो टेंथ प्लेस की डिजिट होती है वो नेक्स्ट साइड कैरी हो जाती है. दैट मीन्स यूनिट प्लेस की डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए. तो आप बताइए B की जगह क्या रखेंगे कि 1 जब उसमें ऐड किया जाए तो आपको यूनिट प्लेस की डिजिट 0 मिल जाए. अगर हम B की जगह 9 रख दे तो सो 9 plus 1 will give you 10. दैट मीन्स यूनिट प्लेस की डिजिट 0 हो जाएगी और 1 आपका कैरी हो जाएगा. सो यस वी कैन पुट B is equals to 9. सो यहाँ पे B 9 हो गया. आप जहाँ जहाँ क्वेश्चन में B है हर जगह आप 9 पुट कर दीजिए. सो A1 1 9 9 0 जहाँ जहाँ B था हमने 9 पुट कर दिया. अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी. देखिए अब यहाँ पे 1 कैरी गया था आपका, ये आपको याद रखना है. सो इस लाइन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये जो 1 कैरी था प्लस A प्लस 1 करें कि आपको 9 मिल जाए. ओके, यही तो आपकी क्वेश्चन की कंडीशन है. सो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. A 1 plus 1 gives you 2 is equals to 9. A is equals to 2 से ट्रांसपोज होगा तो 9 minus 2 which is 7. दैट मीन्स A की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 7 आ गई. सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ A is 7 and वैल्यू ऑफ B is 9. आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. सो 7 1 plus 1 9 gives you 9 0. So according to this question you were asked to find out the value of A and B, which you find out as 7 and 9. I hope this topic is clear.
So revise the chapter very thoroughly. Watch all the previous videos including these revision videos also, and give your test with full sincerity and honesty. All the best for your test. Thank you.